नाज़रीन सलाम अलैकुम। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड में आऊं आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। नाज़रीन, कोरोना जी सूरताल इंतहाई ख़तरनाक फ़ेज़ में दाख़िल थी चुकी है। तिबी माहिरनि जो चवणु आहे त डिसंबर जनवरी में अञा वधीक कोरोना जी जेका सूरताल आहे उहा वधीक ख़तरनाक हूंदी। कोरोना के हवाले से WHO जो सेहत जो आलमी इदारो है उन पारां चयो वियो आहे त 2021 में वैक्सीन अची वेंदी ऐं वैक्सीन के सिलसिले में पाकिस्तान के भी ख़ातिरी कराई वई है WHO तरफ़ां त पाकिस्तान से वैक्सीन के हवाले से सहकार कयो वेंदो। उन सां गॾोगॾु कोरोना ते सियासत भी गॾोगॾु हलंदड़ आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबनि जे विच में ख़ासि तौर ते सिंध सूबे जे विच में ऐं PDM जेको इतिहाद आहे उन हवाले सां PDM जो चवणु आहे त जेके जलसा आहिनि उहे शेड्यूल मूजिबि थींदा ऐं कोरोना जे करे को बि PDM जो जलसो मुलतवी न कयो वेंदो। JUI जो अॼु लाड़काणे में भी जलसो हलंदड़ आहे हिन वक़्तु, जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत चयो आहे त कोरोना जी ख़तरनाक सूरताल आहे, तंहिं करे जलसा जेके आहिनि उहे मुलतवी कया वञनि। उनखां सवाइ सिंध जे वॾो वज़ीर जेको अॻु में ई कोरोना सबबि मुतासिर थियल आहे ऐं हिन वक़्तु उहो आइसोलेट थियल आहे ऐं अदालत पारां जेको आहे उनखे तोहीन अदालत जो नोटिस भी जारी कयो वियो आहे। इन्हनि अहम इशूज़ ते अॼु असां स्टूडियो में ॻाल्हाइण जे लाइ दावत ॾिनी आहे। नवीद एंथोनी साहब पाण पीपल्स पार्टी जा MPA आहिनि ऐं सीनियर अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असां तिबी माहिर डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लो साहब जेके सिंध डॉक्टर्स इतिहाद जा अॻवान भी आहिनि कोरोना जी सूरताल ते उन्हनि खे ॻाल्हाइण जे लाइ भी दावत ॾिनी आहे। टेलीफोन लाइन ते असांखे PTI जे MNA ग़ज़ाला सैफ़ी जॉइन कंदी ऐं जंहिंसां पिणु जेका कोरोना जी सूरताल आहे, मुल्क जी सियासी सूरताल आहे, उन ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। शुरू कयूं था नवीद एंथोनी साहब खां। नवीद साहब, कोरोना की सूरत हाल जो है वो अब क्रिटिकल है। जब मार्च का महीना था, फरवरी का शुरू में, तो सिंध हुकूमत ने ये स्टैंड लिया था कि कोरोना की सूरत हाल क्रिटिकल है, इसलिए वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है और PDM वाले जो पूरे मुल्क में जलसे हैं वो जलसे मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मुसलसल PDM के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो कोरोना का जो इजाफे का सबब बन रहे हैं और कोई भी अगर इस तरह का केस हुआ तो PDM के रहनुमाओं और जो जलसे के मुंतज़मीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे देखते हैं जो फरवरी मार्च में सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था, अब PTI की हुकूमत का और वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया शकील साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को जो है वो हिला के रख दिया है और मरीज़ों की तादाद जो है वो दिन ब दिन जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब फरवरी में पहला केस वो रिपोर्ट हुआ, डायग्नोज हुआ, पता चला, उस वक्त ना तो लोग इसकी जो हिफाजती इक़दामात थे, जो एहतियाती तदाबीर इसके लिए रिक्वायर्ड थी, उसकी कोई जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। और उस वक्त सिंध हुकूमत ने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कि लीडिंग रोल प्ले किया और वो इक़दामात जो इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए अज़हद ज़रूरी थे, वो इक़दामात किए। गो कि वफाकी हुकूमत की बहुत सारी उसमें रुकावटें भी आईं, लेकिन वो उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत ने जो ज़रूरी इक़दामात लिए और उनमें जहाँ तक मुमकिन हो सका लोगों को समझाया भी, कारोबारी हलके को भी समझाया, स्कूल्स बंद किए और सबसे बढ़कर ये कि वफाकी हुकूमत को समझाने में कामयाब हुई कि ये एक वबा है और इससे जो है एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ही हम बच सकते हैं। अब अगर हम मौजूदा तनाज़ुर में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोविड-19 से भी ज़्यादा एक वायरस जो इस मुल्क को पिछले 2 सालों से खाए जा रहा है, इस मुल्क की आवाम को खाए जा रहा है, वो कोविड-19 नहीं है, वो कोविड-18 है। जो कोविड-18 में जो है PTI की सूरत में इस मुल्क पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल हुआ, इस मुल्क के शहरियों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल हुआ। इस कोविड-18 से बचने के लिए जब पाकिस्तान की अवाम PDM की अपील पर PDM के झंडे चले, PDM के बैनर चले, जब पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज बनी, इसलिए कि ना उनका जो है वो रोज़गार इस कोविड-18 की वजह से रहा है
اور کاروبار تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، کہیں پر کوئی امید نظر نہیں آ رہی. جب امیدوں کا قتل ہو جائے تو انسانی جو ہے وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر بات یہ کرتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم صرف لوگوں کا اجتماع کر رہی ہے اور لوگوں کو اس خطرناک موڑ پہ لے کے آ رہی ہے جہاں سے کرونا کی سپریڈنگ ہو، تو پھر یہ وفاقی وزراء یا وزیر اعظم گلگت بلتستان میں کیا لینے گئے تھے؟ ملک تو پہلے کووڈ 18 کا شکار تھا. آپ کیا کووڈ 19 کا سبب نہیں بننے گئے تھے؟ آپ نہ جاتے، آپ وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی ڈیجیٹل ایک کوئی چیز ایسی ایجاد کر لیتے تو آپ کمپین چلانتے. آپ کے وزراء کیا لینے گئے تھے؟ مطلب اپنے لیے سب ٹھیک ہے، جہاں لوگ ان کی جو کمی کمزوریاں اور اس ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جانے والی پالیسیز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے کووڈ 19 کا رونا شروع کر نبی صاحب دیا ہے. ایک چیز سیاست سے ہٹ کر اگر ہم دیکھتے ہیں پورے ورلڈ میں کرونا کی صورتحال ہے اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرونا کے کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اب جب جلسے ہوں پی ڈی ایم کے یا گورنمنٹ کی سائٹ کے پی ٹی آئی کے تو وہاں ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی. جب ایس او پیز فالو نہیں ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر نقصان ہوگا اور زیادہ تعداد میں اضافہ ہوگا تو اس کی تو ذمہ دار پی ڈی ایم بھی بن جائے گی، پھر پی ٹی آئی سرکار بھی بن جائے گی. دیکھیے یہ ممکنات میں شامل ہے، اس میں وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس میں نہیں ہوتا. ہم یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں بھی وائرس سے ہم انفیکٹڈ نہ ہو سکیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. اور پھر جب ہم نکلتے ہیں اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کووڈ 18 سے بچانے کے لیے، لیکن ہم بار بار اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، ورکرز کو یہ بار بار یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ عوامی اجتماعات میں آئیں لیکن آپ ایس او پیز پر فالو کریں، ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. جو حفاظتی اقدامات جو ہے جو ہمارے ڈاکٹرز نے ہمیں جو تجویز کی ہیں دنیا بھر میں، جس پر عمل کر کے لوگ اس سے بچ رہے ہیں، ان پر جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ جو ہماری ہر کمپین کا حصہ ہے اور انہی کی بنیاد پر جو ہے جو پہلے جو جلسوں کی جو اپروولز ملی ہیں اسی پر ملی ہیں. اور مطلب یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی بدنیتی میں شامل ہے. ہم نے تو ہر طریقے سے ایشورنس دی ہوئی ہے کہ ہم ایس او پیز پر عمل کریں گے، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. جی ڈاکٹر صاحب کرونا کے حوالے سے صورتحال जेका ہے وہ انتہائی خطرناک فیز میں ان करे بھی आहे جو गॾो गॾु کرونا सां हिते वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धुर में इख़्तिलाफ़ात भी हलंदड़ आहे. तव्हां कीअं सम्झो था त हज़ारनि जो जेको जलसो आहे उन में एस ओ पीज़ फॉलो थी सघनि थियूं या हिकिड़ो महदूद तादाद आहे 500,000 जीअं चयो अथनि त शादियुनि जे मौक़े ते जेको आहे ओपन तव्हां मैरिज हॉल में शादियूं करे सघो था पिया, इहो मुमकिन आहे त हज़ारनि जी तादाद में एस ओ पीज़ फॉलो थी सघनि. न रुगो पी डी एम जो मिसाल आहे पर वफ़ाक़ी हुकूमत बि ख़ुदि जलसा करे थी पई. कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म जेको आहे उते तक़रीब खे ख़िताब कयो त छा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू खां कहिड़ी एस ओ पीज़ आहे, कीअं इहो फॉलो थी सघनि थियूं? शकील साहब जीअं त जेका पहिरीं वेव हुई असांजी कोरोना जी उन में असां बिल्कुलु हिकिड़ो ब्लाइंड हुयासीं. असांखे इहा ख़बर ई कोन हुई त हिन में असांखे कहिड़े नमूने जी तदाबीर करणु घुरिजनि ऐं मतिलबु कहिड़े मौसम में हीअ वधे थो, कहिड़े में घटिजे थो. ऐं उहो फेज़ असां हिकिड़ो जॾहिं क्रॉस कयोसीं त असां हिन वक़्तु वधीक इक्विप्ड आहियूं अॻे खां. ऐं असां